subspecialty. There are very few dedicated breast specialists. The concept of breast centers was in its infancy, in fact none at all. There was very little awareness about early detection of breast cancer, and counseling, which is so much an important component of cancer care, is not even a part of our medical curriculum. It's a tsunami breast cancer. In our country, 150,000 new cases diagnosed every year. It has overtaken cervical cancer to become the most common cancer affecting women. And if you see this graph, 25 years ago, just about 30% of women under the age of 50 were diagnosed with breast cancer in this country. Today, more than 50% of breast cancers are diagnosed in young women under the age of 50 in our country, as opposed to the West, where majority of breast cancers occur over the age of 60. Lack of awareness, absence of an organized population-based screening program, lifestyle changes like late marriages, not having children, having the first child after 30, obesity, and prolonged use of hormone replacement therapy, resource constraints, and clinical advances not reaching the majority in our country is responsible for advanced breast cancer presentation. A cancer like this is a mammogram of the right breast. As you can see, this is the commonest presentation of a woman presenting to a center here. 70,000 deaths per annum. Every 10 minutes, a woman succumbs to breast cancer in our country. I realized it was time for change, and much as me and my wife had settled status, I was working at the Royal Marsden Hospital in London, I decided to return to India essentially with three goals. First, to establish a dedicated, freestanding, purpose-built center for breast health, the country's very first. Second, which is dear to my heart, a foundation which bears my mother name, and through the foundation, empower people about the importance of early detection and implement a population-based screening program, and somewhere in my professional lifetime to see breast surgery evolve as a distinct subspecialty. The foundation was established in 2007 with essentially three goals: creating awareness, reaching out to the community, and supporting breast cancer survivors. Nothing gives me more pleasure than to introduce my patients. Two of them have come. One who is a very young 23 years. Thank you so much, sir. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, sir. Good evening, the dignitaries on the dais. Yes, it was a shock when I came to know about it at age of 24. I was just married then, and so much of perturbedness and everything going around. And fortunately, I was working with KIMS hospitals, which are associated with the Usha Lakshmi Breast Cancer Foundation too. And I went and met Dr. Raghuram. And the whole scenario after that completely changed. He explained everything, which he already mentioned, that counseling is not being done in most of the hospitals about breast cancer, what will happen, how it will happen, who is going to do, what is going to happen after that and all. So Dr. Raghuram explained everything, every single bit of it. He told me that nothing is going to go wrong. Since I was presented, I went with the lump on one side, and I was diagnosed with the lump on the other side too. So it was a bilateral cancer for me. It was again a shock, but he explained everything in detail. Apart from that, I had a lot of questions about my infertility, what will be my, what will I do after that, how will I have a child and all that. And he explained to me that it is quite easy, and there are things which we can do, like fertility care is there in our hospital, which will take care of everything you don't have to worry about. And this all things could happen because he spent time with us. He spoke about everything which is needed. He took out the scare from me, so I could fight back. I knew what would happen after chemotherapy. I know what would happen after radiotherapy. I could stand back and I could focus. Yes, I can do this. The scare from my mind was removed because of his counseling, and he also explained every bit of it. So I thank you, sir, for that, and that's why I'm here standing in front of you all and speaking about it.
And now, since the application will be launched, everyone will be able to know what the application is going to tell about, what are the myths, what are the facts, what will the chemotherapy do, what will the radiotherapy doing, everything about it. So it will reach many people. And thank you, sir. Now it will also help me further to know about if I have any doubts left. Thank you so much. अमिताभ बच्चन जी, आगंतुक मेहमानों, सादर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूं, जिसने मुझे ऐसे मंच पे आने का सौभाग्य प्रदान किया। जो सपना था, जिस इंसान को सपने में देखते थे, आज उसके साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई मैं। भोर का तारा उगा है, जाग जाने की खड़ी है, नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। ब्रेस्ट कैंसर की एप का आगाज जिस अंदाज से हुआ है, आशा है यह सबके लिए चिकित्सा की राह को बेहद सुगम बना देगी। कैंसर जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोगी के साथ साथ पूरा परिवार गमगीन हो जाता है। लेकिन साथियों, आज चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है कि अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ये दूसरी सभी बीमारियों की तरह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ऐसे होनहार डॉक्टरों के साथ हो तो हम सब इस बीमारी का डट कर मुकाबला कर सकते हैं और बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं यही कहूंगी कि ये कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका नाम लेते ही मौत सामने खड़ी नजर आए, बल्कि अगर इसका डटकर मुकाबला किया जाए तो न केवल इससे परे हटाकर बल्कि मौत को हराकर खुशहाल जिंदगी जिया जा सकता है। कैंसर आपको जकड़े इससे पहले आप इसे पकड़ें। यह कथन तभी सार्थक होगा जब आप समय रहते इसे जानें, समझें और नियमित जांच कराएं। मेमोग्राम हौसला हो अगर हाथ और डॉक्टर रघुराम जैसे डॉक्टरों का हो साथ, तो कोई कारण नहीं कि हम इस पर विजय न पा सकें। रोगी को नहीं बल्कि रोग को घुटने टेकने पड़ेंगे। जानकारी का अभाव, बातचीत का अभाव, अज्ञान गलत धारणाओं को पैदा कर देता है। लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता लाने और उसके प्रति सचेत हो, इसके लिए डॉक्टर रघुराम ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मरीजों तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो समय रहते अपना इलाज करवाकर पूरी तरह से भरपूर खुशहाल जिंदगी जी सके। ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी जिन्हें उपचार पद्धति, बीमारी के लक्षण, निदान, साइड इफेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये ऐप उनके भय और चिंता को कम करने में मदद करेगी। डॉक्टर अपनी व्यस्तताओं की वजह से और मरीज अपनी हिचकिचाहट की वजह से अगर अपनी सभी शंकाओं का समाधान न कर पाए तो ये ऐप एक प्रयत्न है जो रोगी और उसके परिवार को पूरी तरह से मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराएगी। कैंसर की रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। परिवार और दोस्तों से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि खुलकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। बातचीत से हर समस्या का हल निकलता है। ये ऐप एक पहल है जागरूकता की। ये ऐप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है मरीजों के लिए। अपेक्षा है इस ऐप के आह्वान को सुनकर हर महिला ये संकल्प करें कि आओ, उठो, चलो, भागो, दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। दोस्तों, मैं अपनी जो भी कैंसर के मरीज मुझ जैसी, जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो आप सब भी ठीक हो सकते हैं। मैं सबके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, कैंसर को तुम्हें हराना है, कैंसर को तुम्हें हराना है। विपरीत हवा का झोंका है, इसलिए पसीना बहाना है। कैंसर को तुम्हें हराना है। रात के बाद सुबह को आना है, कैंसर को तुम्हें हराना है। ये ऐप बड़ी उपयोगी है, ये ऐप बड़ी उपयोगी है। कैंसर का ज्ञान कराएगी, मरीजों को ज्ञान करा करके बीमारी दूर भगाएगी। लेकर ईश्वर का आशीर्वाद आशा के दीप जलाना है। कैंसर को तुम्हें हराना है। कर रहे सेवा डॉक्टर रघुराम, कर रहे सेवा डॉक्टर रघुराम।
करती उनको सौ सौ सलाम, हर एक बुलंदी को छूकर कर दे दुनिया में एक नाम। वो चमक बिखेरेंगे अपनी, ये चमक बिखेरेंगे अपनी, दुनिया को उन्हें महकाना है, कैंसर को तुम्हें हराना है, कैंसर को तुम्हें हराना है। अस्तु, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।